if you're lucky then you will not be misguided, but starting में there for 1 year or something you भटकते रहते हो, you wander because there is so much study material, there are so many educators, there is so much information deluge. So I also spent that 1 year just figuring out, and then I got some clarity where if you will look at my mark sheet, I somewhere like struggled in the paper one, but paper two, which I prepared very dedicatedly for both the exams, that's where I excelled, and that is what led to the merit list में आने वाला चीज. सर का guidance was probably like 70% of my written का पूरा preparation. To be honest, मतलब it is a challenge which remains every day. आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि with a job that कि अब सब सही हो गया है. Every day is a challenge. Every day you have to do something for it. And there are days when you fail, and there are days when you get demotivated and it derails. Best way to not get exhausted has to be up to you. ठीक है, बातचीत से स्टार्ट करते हैं. तो सभी को मैं बता दूं कि सचिन जो अभी फॉर्मर एस्पिरेंट है, जिन्होंने अभी जो CAPF के 2024 के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जिसका रिज़ल्ट आया है, उसमें सचिन कुमार ने जो रैंक है 263 जो है वो प्राप्त की है और अपने CAPF के सपने को साकार किया है बेसिकली. सो जो सचिन, हमारी जो ऑडियंस है या बोल लीजिए जो हमारे जो बच्चे हैं, वो सारे जो बच्चे हैं CAPF की प्रिपरेशन कर रहे हैं मोरलेस. एक साल कोई अभी एकदम फर्स्ट अटैम्प्ट में है या फिर किसी ने 2 या 3 अटैम्प्ट दे लिए हैं, तो सारे बच्चे मोरलेस CAPF की तैयारी कर रहे हैं और कह लीजिए असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं. तो शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, स्पेशली आपके फैमिली बैकग्राउंड से, और किन किन चुनौतियों का सामना आपने किया, क्योंकि UPSC CAPF की जो जर्नी है बेसिकली वो ईजी तो है नहीं, क्योंकि UPSC का जो भी एग्ज़ाम है वो टफ एग्ज़ाम होता ही होता है. कभी हाईज आते हैं, कभी डाउन आते हैं, तो वो सब चीज़ों को आपने कैसे टैकल किया, सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं सचिन. यस सर, अगर मैं थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ बैकग्राउंड वाइज, सो माय फादर इज एक्चुअली सर्विंग इन CISF. So he is not a gazetted officer or anything, but I have lived in very humble background from the start, and I have always been academically inclined and well that way. And मैंने फिर वही JEE दिया, फिर engineering करी, then I got a job like after college placements and all. So there स्कूलिंग कहाँ से हुई थी सचिन आपकी? स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय से हुई थी, और थ्रू आउट द कंट्री जैसे CSF में होता है. सो थ्रू लाइक 3 schools, 3 KVs in like one भिलाई, one दिल्ली, one हिमाचल. सो ऐसे था. अदर देन दैट कॉलेज मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करी फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एंड फ्रॉम देन आई गॉट अ कॉलेज प्लेसमेंट इन सैमसंग वेयर आई एम स्टिल वर्किंग. Even now I'm working there. So after 2021 I graduated and joined the company, and then after 6 months I somewhere realized that this is not for me. So that's where I started preparing for civil service like CSE only. CAPF was not in my radar back then. So for about, I guess, maybe 2 years I prepared along with the job for CSE, and I built a foundation, a base for this. And then when I felt a bit confident, then I started exploring other exams also. So that's where these 2 exams came, CSIR ka exam and CAPF ka exam. These were the first 2 exams which I considered outside of CSE. Yeah. So that year दोनों हुए थे. तो CSIR में भी सबसे पहले I came across सर का YouTube channel through I was looking for CSIR का study material because essays उसमें पूछे जाते हैं काफी सारे. And that is why I somewhere, if you will look at my mark sheet, I somewhere like struggled in the paper one, but paper two, which I prepared very dedicatedly for both the exams, that's where I excelled, and that is what led to the merit list में आने वाला चीज. So that is why I messaged sir also regarding this thing, because it was pretty मतलब काफी miraculous टाइप सिचुएशन थी ये, मार्क्स वाइज एंड एवरीथिंग. जो तुम्हारा स्कोर कार्ड था ना सचिन, जिन्होंने भी देखा था, जिसको भी दिखाया मैंने, वो सब शॉक थे कि पेपर 1 में जस्ट एकदम मार्जिन पे है. कहते अगर जरा सा भी कम होता ना तो पेपर 2 ही चेक नहीं होता. दैट वाज द ऑफिशियल कट ऑफ. व्हाट इज माय मार्क्स इज द कट ऑफ इन पेपर 1. सो इवन 0.1 below that I would have been out. And my overall marks are 1 more than the overall cutoff. So even in like if written I got 2 marks less, then I would have been out. So that way written is very miraculous, and that's why I felt very grateful, because
सर का गाइडेंस वाज प्रॉब्ली लाइक 70% ऑफ माय रिटर्न का पूरा प्रिपरेशन. So that is why I connected, and that is why I also want to share that, because it will be, because मेरे को भी कहीं से guidance मिली है, तो अगर if I can share some insights and others can get some help, so that's the best thing, right? सो सीएससी में कैसा एक्सपीरियंस था, कितने साल सीएससी में बिताए? क्योंकि मोरलेस सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कैसे प्रिपेयर करा, क्योंकि जो एकदम जो नए बच्चे हैं जो अभी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनको बेसिक वो चीज़ पता होनी चाहिए कि कितना हार्ड वर्क लगता है इसके पीछे. सीएससी में कितने साल, कितने अटेम्प्ट थे? सर 2022 मैंने प्रिपेयर किया है, 23 भी प्रिपेयर किया है, और अटेम्प्ट दिया है सर जो प्रिपेयर किया है? 22 में भी नहीं दिया, 23 में भी नहीं दिया, 24 में ही सीएससी दिया था. या 24 में ही सीएससी दिया था. तो रिजल्ट मैंने क्या रहा 24 का? सर 24 में सीएससी में प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ. मेरे 77 थे, 87 वाज द कट ऑफ. सो सेम ऐसा चल रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव में आई एम ऑलवेज स्ट्रगलिंग अ बिट. हाँ, वो पेपर वन दिख रहा है पेपर 97.4. वन इज द थिंग. ठीक है. But foundation wise, conceptual understanding wise, I believe that 2 years of 22, 23, 24, 3 years of studying, that built a very good conceptual base in terms of understanding of things and being able to articulate and all that. And that is like written part has gotten better due to that. So these 2 years, 3 years, I regularly, matlab starting में तो civil service में you if you're lucky then you will not be misguided, but starting में there for 1 year or something you आप भटकते रहते हो, you wander, because there is so much study material, there are so many educators, there is so much information deluge. So I also spent that 1 year just figuring out, and then I got some clarity, and then I थोड़ा focus मैंने study करी उसके लिए. So it takes a lot of work, and especially figuring out how to manage current affairs. That is a very big challenge for CSE, I would say, because initially we have all kinds of magazines and we have newspapers as well. So figuring out a system for that is very difficult, and more so because without current affairs you cannot do the exam. Like even if you somehow make it to the prelims, without the dimensions which current affairs offers, without adding them to your written part, you cannot get the required marks, I believe, because that's what they are looking for, how much you know what is going on with the real world in every domain. So those current affairs value additions are very important, and that part was strong here because मेरे को 3 साल हो गए थे. I had figured out a way to incorporate the current affairs in a very structured manner, so that part helped. देन अब कैसा लग रहा है? और एक चीज़ और सचिन, क्योंकि जॉब के साथ प्रिपेयर करना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि 9 to 5 की जॉब करो, उसके बाद जो है शाम को स्टडी करो, ये शेड्यूल कैसे मैनेज करा? क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे हैं, एक क्वेश्चन सबका है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें. तो वो तो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुमने तो जॉब के साथ करी है, तो कैसे टाइम को मैनेज करा? तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब इट इज अ चैलेंज व्हिच रिमेन्स एवरी डे. आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विद अ जॉब दैट कि अब सब सही हो गया है. एवरी डे इज अ चैलेंज, एवरी डे यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट, and there are days when you fail, and there are days when you get demotivated and it derails. So मेरा 1-2 साल ऐसे ही चला है, तो that is why it took longer than it should have. So what I have understood after all those struggles is that you need to keep a system. You need to keep a system as per your capabilities. You need to know that what you can achieve like in a day, and having a very systematic thing is very important. Like make a Excel sheet. Okay, these are the things which I have to study. I made a checklist. I do the checklist like every day. It gives me confidence as well. And like everybody says, there are like isme I won't be able to give any extraordinary suggestions, but like everybody says, आपको morning hours को utilize करना है, आपको evening hours को utilize करना है. And having a structure helps, because you have to, because based on your work, there are सबका काम अलग अलग होता है, तो everybody knows, they understands their work, and they understand how much bandwidth they will get on particular days. So just say for example, I get work from home like 2 days a week. So I work around that ki acha, okay, in office days I will study something light, in like work from home days I will study something different, right? And what time I will study the newspaper. So
best way to not get exhausted has to be up to you, and you have to structure that. And knowing yourself is the biggest thing, I believe, like इस चीज में आने में. मीन्स यू आर सेइंग दैट कि सब स्टूडेंट्स का जो टाइम टेबल होता है बेसिकली वो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम, वो जो आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से। तो जैसे आपने बोला कि आप एक चीज़ करते थे, सिस्टम बनाते थे, मीन्स शेड्यूलिंग करते थे, राइट? एक्सेल शीट में जो चेकलिस्ट हो गई कि ये टॉपिक है जो मेरे को ख़त्म करने हैं, और जब भी टाइम मिलता था, जैसे आपने बोला कि वर्किंग आवर में जो है मेरा ये सिस्टम था कि मैं इतना टाइम पढ़ूंगा, इतना टाइम ये करूंगा, और जो डेली जो अलग रहता था उसमें अलग रहता था। मतलब जितना टाइम हो उसके हिसाब से हमें अपना शेड्यूल मैनेज करना है। यस सर. दिस और इज द मैं पॉइंट, राइट? एक आध चीज मैं ये बोलूंगा कि जो लाइक माय शॉर्ट कमिंग्स व्हिच आई रियलाइज इज लाइक you need to practice a lot. You need to do mocks and everything, and for the paper one, because that is something I've never done. That is why I struggle. And but you have to do that to get a very very good rank, and good rank is always better. So that practice is very important. Uh, so practice has to be incorporated, because often we just spend our time studying and we don't practice, because ऐसे mental थोड़ा सा barrier सा होता है कि practice करने में it will, ऐसे exam वाली feel आएगी or something. Practice means mock test, simply. Mock test and any kind of, like, whatever you think works. Like, you can make mind maps, you can revise it, you can do, but just that part work has to be done. Often in the initial parts of my preparation, all I did was study, 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 and No retention revision. और practice कुछ हुआ नहीं, तो काफी उसमें वो हुआ, टाइम वेस्ट हुआ. हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो बच्चा स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रहा है, सो सबसे पहला तो चैलेंज होता है पूरा सिलेबस खत्म करना है। या उस चैलेंज के बाद फिर आता है कि उसको रिवाइज करना है, देन उसके बाद फिर मॉक टेस्ट, फिर वो प्रैक्टिस वाला सेशन चालू होता है। तो इसमें मतलब ये टाइम टेकिंग थिंग है, तो इसमें डेफिनेटली टाइम लगता है, लेकिन एक बार ये कर लिया उसके बाद प्रैक्टिस ही करनी है। यस. और अगर आप वर्किंग नहीं है, तो देन इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आई बिलीव. तब तो आप डेडिकेटेड स्लॉट्स बना सकते हो बिल्कुल, कि ओके, दिस मच टाइम आई हैव टू डू प्रैक्टिस, दीज मेनी आवर्स. लाइक इन वर्किंग इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग, कि आप प्रैक्टिस करोगे या पढ़ोगे, या फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ऑफन चैलेंजिंग एट टाइम्स, कि आज तो न्यूज़पेपर ही हो पाया, हम्म। उसको भी नहीं छोड़ सकते, बैकलॉग बन जाता है कितना उसका. टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, सचिन? सर अभी तो आई हैव मेड अ सिस्टम, तो मुझे आधे पौने घंटे में हो जाता है, आधे घंटे से 45 मिनट्स मैक्स, वन डे. सो अभी नोट्स भी भी बनाते हो क्या न्यूज़पेपर के? यस सर. नोट्स के बिना आई डोंट बिलीव दैट रीडिंग न्यूज़पेपर इज ऑफ एनी यूज. यू हैव टू मेक नोट्स. एंड आई हैव मतलब refined the process of reading newspaper a lot along the years. And now how I study is I focus on the headlines. I focus on the headlines, and whatever information I find useful, I just focus on noting it down very quickly, not going too much into it, because those editorials and articles have been written from a very academic point of view. All of it is not relevant for you. हम्म। You can note it down, and along the time you will get many many articles on a particular same issue. So when that issue is done with, then you can consolidate it by going back to the newspaper. स्टार्टिंग में कितना टाइम लगता था? मीन्स क्योंकि Starting में न्यूज़पेपर तो अपने आप में एक like हर्डल है सब 3 बच्चों hours, के लिए। 4 hours, like every day, सबको all ऐसे ही day लगता है मतलब newspaper ही पढ़ रहे हैं, it's like that, मतलब सारे दिन में सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही खत्म हो रहा है। न्यूज़पेपर ही हो रहा है. इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. एंड इन द इनिशियल फेजेस, इवन फॉर सीएपीएफ, ये जो सिस्टम अभी वाला है नोटिंग इट डाउन, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करता हूँ, बट अर्लियर इवन इन सीएपीएफ से पहले आई यूज्ड टू राइट इट इन द पेपर्स, लाइक हैंड रिटन. That is absolutely non workable, मतलब because you can't manage that much papers and all that, and kuch edits karna ho, how will you? Because in word, if you copy paste things, then you can search for it, you can just do a simple search, you will find that thing. Otherwise, so many pages, so many notes, it is not feasible. And because to make that system work, the handwritten note system work, I made shorter notes from the newspaper notes for this, ताकि मैं उसको पढ़ पाऊं. So that was the only way it could work. And in the file I will show today, I will show snippets of how I have made those short notes, और मैं उन्हीं को ही पढ़ के गया था actually. So that is very useful. वो सिनेरियो कैसा था जब रैंक लिस्ट में अपना जो नाम देखा था? वो सीन कैसा था?
सर मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, आई हैड टोल्ड एवरीबडी नहीं होने वाला, बिकॉज मैं तो मतलब एग्जाम देके ही मुझे वो, एक्चुअली लास्ट ईयर मेरा प्रीलिम्स भी मैंने दिया था, पहले प्रीलिम्स दिया था सीएसई का, और हम्म। फिर ये दिया था, तो प्रीलिम्स में भी मुझे पेपर देके आई गॉट अ मिक्स्ड फीलिंग कि मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, बट फिर नहीं हुआ, और प्रीलिम्स में मतलब मार्क्स भी पता नहीं चलते, तो इट्स लाइक फिर तो एकदम अनसर्टेनिटी आ गई थी। एंड आई गॉट अ वेरी सिमिलर फीलिंग फ्रॉम दिस पेपर एज वेल, इसका भी जो पेपर वन था मुझे भी एक सेम फीलिंग आई, तो मुझे लगा इट्स कुछ भी हो सकता है। तो whole year I did not have hopes, but once this thing happened, this medical में जो नाम आता है आपका, तो वो पेपर टू जो क्लियर होता है फर्स्ट स्टेज, so then I was relieved, but afterwards even in the interview I felt like some places I was lacking, मतलब some things I could have done better if I was just a little more aware. तो फिर I thought there were very little chances, to be honest, and I have been seeing rejections for like 2 3 years now. So and now I've been here like studying like काफी टाइम से, तो that thing comes in कि भाई होगा भी कि नहीं होगा and everything. So it was absolutely unexpected. I was ready to not find my name on it. That is how that was my mental state when I opened the PDF, and somehow I searched my roll number, and when I searched for it, it did not show anything. So I thought नहीं हुआ. But apparently my phone was just slow. So फिर मुझे वो दिखा वहां पे, तो I was like कि I just couldn't believe it. I mean, there were mind went blank as such, because it was काफी surreal मतलब. It was, and afterwards the feeling I can describe is the one which I got after a few days. So that was a sense of intense relief, because and relief and like confidence ki okay, something can be done, because this is not the end of journey for me, because I'm this is just a new start and a better start. So that is, it is a more of a confidence wali cheese and a building block to something bigger which I want to do. इट्स लाइक बूस्टर फॉर सीएससी। Booster for CSE, and a very like a very confidence wali thing, and family is also relieved because my पापा को family, कैसा लगा? पापा तो सर ऑलरेडी पैरामिलिट्री उनको में। उनको तो यही चाहिए था, मतलब वो, मतलब ही हैज बिन ऐसे, मतलब इंटर्न वो मेरे को बोलते नहीं है कभी, बट वो मन में यही चाहते थे हमेशा। ऑब्वियसली पेरेंट्स डोंट से थिंग्स बिकॉज वो नहीं चाहते कि बच्चे के लिए एक्सपेक्टेशन सेट हो, प्रेशर में आए एंड ऑल दैट, बट वो पता चल जाता है कि वो यही आंखों में चाहते दिख जाता है पापा मम्मी हैं, की। आंखों में दिख जाता है। So he is very relieved, and I'm happy he is relieved, because him being relieved is a pressure of my head as well. So I can focus on like studies better now, I feel. अब Yes. आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। Yes, sir. ठीक है, वैसे ऑलरेडी आपने काफ़ी चीज़ डिस्कस कर लिया, कैसे कैसे अपना सिस्टम बनाया, कैसे कैसे डिसिप्लिन बनाया, कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करा, देन उसको रिवाइज करा, देन प्रैक्टिस करा। अब अगर स्ट्रेटेजी बताना चाहे पेपर टू के लिए, क्योंकि Yes. एक्सेप्शनल मार्क हैं आपके पेपर टू में, टॉपर्स के आते हैं इतने मार्क्स, और टॉपर्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि अगर देखेंगे, आप चेक करेंगे लिस्ट में, आपने करा भी होगा, आपने बताया था जब मैंने कॉल पे बात करी थी। और एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ मैं। ठीक है, तो जब आपने हमने बात करी थी तो बताया था कि मैंने चेक करा, रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर, किसी के सो मतलब इतने अच्छे नंबर किसी के नहीं है। और Hmm. हाईएस्ट नंबर जहाँ तक मुझे पता है वो 117 है, और 111 आपके हैं। ठीक है, तो पेपर टू की स्ट्रेटेजी क्या थी? और एक चीज़ मैं बच्चों को बता दूं कि आज तक सचिन जैसा कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जिसे एग्जाम में जाके पता चले कि इसमें रिपोर्ट राइटिंग भी है, कि उससे पहले सचिन को पता नहीं था कि पेपर टू में रिपोर्ट राइटिंग भी आती है। तो सचिन को जस्ट एग्जाम में जाके पता चला, हाँ इसमें ये भी फैक्टर है, एक रिपोर्ट राइटिंग भी करनी है। तो मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी। Practice नहीं करी थी। हाँ, सिंपल तो चीज़ सर, की अगर एग्जाम में जाके पता चल रहा है कि इसमें रिपोर्ट राइटिंग है, तो हमने प्रीवियस ईयर को देखा भी नहीं था। yeah. ये मतलब है इसका सिंपल। तो बिना प्रीवियस ईयर को देखे हुए 111 नंबर कैसे आते हैं पेपर टू में, ये बताओ हमें बस। सर ये मैं मतलब अगर मैं थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी में जाऊं, अपनी खुद की साइकोलॉजी में, तो एक्चुअली थ्रू आउट द स्कूल लाइफ मतलब आई हैव बीन अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, एंड द टाइप ऑफ स्टूडेंट जो कभी ये नहीं देखता है कि पिछले साल क्या क्वेश्चन आया, कुछ नहीं आया, जो भी किताब में लिखा है पूरा पढ़ लेगा, मैं सारा पढ़ूंगा, आई विल रीड एवरीथिंग देयर इज, एंड आई नेवर लेफ्ट अ स्कोप फॉर अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड जो मुझे ना पता हो। दैट हैज ऑलवेज बीन माय स्ट्रेटजी, but that strategy fails when it comes to UPSC, because there is no book for it. आप पढ़ते जाओगे, you can read for 10 years, it will still never be over. So यही मुझे यहाँ पे आके रियलाइज हो गया है कि PYQs are everything in this whole UPSC के एग्जाम्स। तो
that is why I did not like do the PYQ analysis for CAPF, because उसके लिए मेरा dedicated focus भी नहीं था, because it was just like दे देते हैं, like you know, and actually मुझे पहले देना चाहिए था, but it somehow it missed my radar. um, एक चीज और, so सचिन ने मेरे को ये भी बताया था कि इसका ये जो अटेम्प्ट था ये फर्स्ट था और ये लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब एक पहली बार सीएपीएफ के एग्जाम अटेम्प्ट किया था, और एज भी हो गई अब ना, अभी लास्ट टाइम भी था। सो सर वो वही चीज थोड़ा और की। थोड़ा एज में भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बिकॉज दे पिक 1st August राइट एज द कट ऑफ, हम्म। right? So my birthday comes at 31st July, so it is just like my एक पूरा साल चले जाता है because of one day back. So regarding the PYQ thing, that is why I did not look for it, because मुझे कभी जिंदगी में आदत नहीं है PYQs देखने की किसी भी एग्जाम के. But again I should have, because अगर मैं देख लेता तो थोड़ा और भी बेटर आने चाहिए थे, because रिपोर्ट में I know that I did some mistakes. But this strategy session, I will focus on the positives, what I did well, because that is where I can help you the most. I think that report writing and all that, उसमें सर आपकी बहुत अच्छे से help कर देंगे. He knows everything there is to know about, you know, written part. So first thing that will help, I believe, is that having a very comprehensive mindset about things. Sometimes we, you know, study things just to clear an exam. We study topics just to be able to write something on them. I don't think मतलब कि ऐसा करने से you will give yourself the best chance to score the maximum marks, because the person who is checking that answer of yours, that person is probably a very qualified, very, you know, well read professor or something. So they will not be satisfied with something which is just, you know, surface level. So they will expect something distinct, something like deeper, comprehensive. So पहले तो आपके अंदर वो थोड़ा सा, you need to develop a urge within yourself to write a content which is so comprehensive, and आप खुद satisfy हो जाओ वो पढ़ के, या लगे कि कुछ पढ़ा है मैंने इस चीज के बारे में. I know something which is like 99.99% people won't know about it, right? So having that approach and mindset towards reading topics is very important. At the same time, for competitive exams, you also need to ensure that कि आप इतना भी ना करो कि मतलब आपका टाइम यही करते रह रहे हो आप. तो you need to find a balance between comprehensiveness and like time. So first thing is that. Uh, other things I believe that I can you know, explain better by sharing the document which I prepared for this session. Is my screen visible? Yes, yes, it is visible, Sachin. Yeah. So I made this document specifically for today's session, because ऐसे अगर मैं express करता तो मुझे ऐसा लगा कि justice नहीं होता proper आप लोगों को. तो here in this document I have yeah. This document is specifically tailored to only mostly the essay part, because other components, report writing and everything else is, you know, I believe you guys can cover very well. So with respect to, I will just start with the essay. So first thing is mindset. What should be the right motive and approach to writing any essay? So essay is a long form one-sided conversation, because आपको एक टॉपिक दे दिया है उसमें, और यू हैव बीन सेड कि उसके ऊपर 300 वर्ड्स लिखो. अगर आप किसी से नॉर्मल बातें करोगे, बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन करोगे, तो they might ask some questions, you will say something, they will say कि okay help me understand this, you will say something, तो वो समझ जाएंगे. But here nobody is here to ask you any questions कि okay, so you need to, it's your responsibility कि आप उसको सारी चीजें समझाओ उसके बारे में, right? So it is one sided. That is why you need many dimensions, and lot of requirements are there. This all is my views. So many requirements are there according to me, which I will cover now. The first requirement, if you see here on the left side, dignified passion. I made this word yesterday. So you need to be passionate about what you are expressing, what your point is. आपके अंदर से वो आना चाहिए कि नहीं, मुझे ये कहना है, मुझे जो सामने वाला रीडर है उसको ये समझ आनी चाहिए ये बात.
that passion should be there, but sometimes if our passion is uncontrolled, then we can also say some rash things. So those are not, आप यहाँ वो नहीं कर सकते आपको dignity. That is why I've added the word dignified. You need temperance and attention to detail. Temperance is basically आपको थोड़ा सा लिमिट में रह के बात करनी है और आपको अटेंशन भी देना है डिटेल पे. Passion, the word which I used, it is basically creating an emotional connect with the reader. So the reader should be engaged. Reader को ऐसा लगना चाहिए कि okay, what will happen next? There should be a hint of excitement and anticipation in an essay. It should act like a thriller. Like basic analogy आप ये रख सकते हैं कि essay is like your basically a short movie. आपको पूरा प्लॉट भी रिवील नहीं करना है और आपको इनफ एक्साइटमेंट भी रखनी है और आपको पैशन भी रखना है पर लिमिट में भी रखना है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम टू बी एन ऑफिसर. So you need to demonstrate those qualities. This OLQ here is officer like qualities. So all this you should be in your mind first before approaching any essay. Okay, so I told you that it's a one-sided conversation. Second thing is that it's a long form, 300 words, right? So that 300 words is an opportunity for you to fulfill all the needs for a great essay. So these are, I believe, these are 4 things which are very important. First is critical thinking. आपको कोई टॉपिक मिलेगा तो you need to be able to think the opposite of that as well. But usually आप देखेंगे कि last year भी questions आए थे तो often वो टॉपिक में ही opposite चीज they put it there, right? Like there was a question like pros and cons or something, like it was in the heading only. So they're already giving you the negative part of that topic. But if it is not there, you need to be able to have that critical thinking to come up with the negative part. So this is called thesis and antithesis. I will explain these words more. Second is this holistic perspective. You need to be able to cover all the dimensions there are with respect to that topic. आप अगर कम dimensions रखोगे तो फिर उसमें आपका जो holistic perspective है वो cover नहीं होएगा. So if that is true, I think you all know this, right? Third is evidence, examples, and quotes. These are important, very important, because इनके बिना essay is incomplete. And more importantly, you should know how to use them. So we will also cover how to use them. And last is futuristic vision. So this is very important for the conclusion, but also while coming up with the thesis. So these are the things to keep in mind. Sir, is there a way where I can, like while sharing the screen, I can see the people also, like video as well? Because ऐसा थोड़ा हाँ मुझे वो लग रहा है. नहीं हाँ है इसमें देखो नीचे की साइड ना एक यहाँ पे टॉकिंग करके कुछ लिखा हुआ होगा, देखो लिखा हुआ है कहीं ऊपर नीचे कहीं. नहीं यहाँ पे नहीं, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर. तो वो टॉकिंग पे जब क्लिक करोगे ना तो तुम उनको देख सकते हो जो हमारे अटेंडीज हैं, हमारे बच्चे जो हैं. टॉकिंग हेमंत्रा एजुटेक ऐसे करके अभी आ रहा है नीचे. सर मुझे तो दिख नहीं रहा. मीटिंग टॉकिंग, ओके टॉकिंग. इस पे क्लिक करो डबल वाले पे. Oh right, yes. ठीक है, Now I can हो गया. see. Yes. Now it's better because अब तक मुझे ऐसे अपना ही स्क्रीन देख रहा था मैं, तो मुझे हाँ वो लग रहा था. So is this part clear for everybody? This first part, the approach and mindset. ठीक है. So this second part, and also I've added here structure and coherence. This is also very much a big requirement while writing the essays. So for this structure and coherence, this is where you do the brainstorm or mind mapping. This is all this is happening before you even set the pen on the paper, right? So I have also covered how to do this. So first here on the top is we have the topic. You will get that on the paper, right? On the topic, you need to analyze the nature of that topic. वो topic का nature क्या है? Is it a general topic? Is it a philosophical topic? Or is it a hybrid of both? Like दोनों में कुछ ना कुछ mixture है. Usually CAPF में generally पूछते हैं. UPSC और mains में, civil service mains में they go for philosophical. Or actually I have covered it here. All these mind maps are from my notes for essay which I made last year.
So I told you I gave the CSIR exam last year as well. So in that there was a philosophical essay ka dedicated question. That is why I prepared for it. And CSIR happened before the CAPF. That is why I prepared for this. But I believe that preparing for philosophical gave me an edge in CAPF, because CAPF mein questions are general, but the learnings from philosophical essay writing, if you apply it on those general, it enhances the quality of it. Okay. So philosophical, if you guys understand it, these are basically some abstract quotes which are like there sometimes. जैसे कुछ abstract सा quote लिख दिया और आपको उसके ऊपर लिखना है, आपको पता भी नहीं है कि वो क्या है, what it even means, right? So that's how it goes. We will go in over the examples later. So first you have to decide what's the nature of the topic. Then once that is decided, you need to generate ideas like what can it be about, like उसके बारे में आप क्या मतलब क्या क्या आप सोच सकते हो. You need to segregate your major ideas and your minor ideas. Focus on the major ones. This can be a very easy task. This won't be a very difficult task like most of the time, because CAPF में generally होते हैं, तो ऐसा कुछ इतना कुछ इसमें वो नहीं होगा आपको problem. So once your idea is generated, okay, so from here na, in the right side you have this view stance as well. So once these two things are, you know, their nature of the topic, so then you will form a view on it. Because essay आप बहुत general लिखोगे without a view, then you won't have the passion. Because आपका कुछ view होगा तो आप उसको defend करोगे, तो आप उसके लिए argue करोगे, आप उसके लिए fight करोगे, right? And that will reflect your passion, and that is what will keep the reader engaged. So आप अपना view कैसे बनाएंगे? So मैंने generally, these are the general pillars along which you can have a view. So dialectical is basically for philosophical essays. Dialectical is a very, you know, a complicated sounding word, but it only means that two sides of one thing. So philosophical essays में there can always be two sides, and आप बता नहीं पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है. It's only a matter of what you choose to believe in. ठीक है? So that is for philosophical essays. So here the thesis and antithesis comes. These are simple terms for the two opposing views. ठीक है? Second is a strong moral or legal stance. So you can take this in examples like if there is some essay on like discrimination or untouchability. So you have to take that moral and legal stance. You cannot go against it, because there is a constitution says it, right? So there is no scope, or not much scope at least, for taking any other stance. For some like so for certain topics you can choose to take a pro government stance as well. That also works. ये सर ने भी बता रखा है काफी. I believe that हमने last year मैंने देखा था ये सब. Middle path. So that is for controversial topics. If any topic comes, you are not sure what to say, you can say pros and cons, and you can आखिरी में you can take a middle path. It will work. General topic में तो like if there is some general topic about the problem of Naxalism or anything मतलब like that, तो उसमें तो आप ज्यादा कुछ ऐसे पर्सनल व्यूज नहीं आएंगे. आप उसको डिस्क्राइब ही करेंगे कि भाई डिजिटल ऐसे डिजिटल इकोनॉमी इन इंडिया, तो उसमें यू विल जस्ट डिस्क्राइब इट हाउ इट गोज, हल्का फुल्का. सो दीज आर जनरल टॉपिक्स. सो इन द फर्स्ट थ्री there will be a thesis and there will be an antithesis. Antithesis is the opposing view जो आप खुद से डाल रहे हो वहां पे, but that view you are keeping as weaker, because आपको अपने व्यू को आखिरी में उस एंटीथीसिस के ऊपर से विन करवाना है. So that way the reader will know that you know about the point as well and the argument as well, and you know how to make the argument trump the opposite argument. ठीक है? And the middle path you will keep a equal strength between the both the views, and you can finally like you know come to a conclusion. ये सब clear हो जाएगा with examples. So once your stance is clear and your nature of topic is there and you understand the topic, that is where you will make the thesis कि मेरा what is my view on it. मैं एक line में you have to summarize what your final conclusion takeaway point from this essay is जो आप लिखने वाले हैं. This has to happen before writing the essay, because if you don't decide this before the essay, then your essay will just be, you will be writing anything matlab, and no, there will be no structure, there will be no coherence. So thesis, and if possible, if applicable, antithesis. And I will recommend having an antithesis unless possible ही नहीं है, because antithesis shows that you are able to see the other side, you can argue for the other side as well. Okay. So once these steps are done, these have to be followed in an order.
So once these steps are done, then you can decide the structure of your essay. This structure से ही आपको dimensions भी clear हो जाएंगे. So structure will be determined by what thesis you have chosen. Now these things I have taken from sir के lectures only, because sir ने ये बताया था last year कि you can take multiple approaches to a structure. Like there can be temporal approach, like time wise, कि आप एक trace कर रहे हो किसी problem को throughout the history of time. Like उस time पे situation ऐसी थी, अब ऐसी है, फिर better हुई. You can take this approach. This is for the body. This part is for the body of the essay. Second is walk of life, like different aspects of life में उस चीज की situation क्या है. तो ये भी सर ने आई बिलीव पढ़ा रखा होगा लास्ट ईयर हमें, तो मैंने देखा था ये सब. प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड भी हो सकता है, सेक्टोरल हो सकता है कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज आर ऑल देयर. दीज आर प्रॉब्ली मोर सुटेबल फॉर like general type of essays and abstract topics. So I think you guys will know all this. ठीक है. So but this has to be decided first कि आपको ऐसे ही लिखना है तो ऐसे ही लिखना. So this will provide the framework of what you will write in the essay. And this tape, this what I have made here, this rectangle, this has the broad structure. I think ये भी आपको clear होगा कि intro has to be 20%, conclusion has to be 20%, 60 words, 60 words. बीच में you can put like 2 paras or 3 paras, up to you. But in a perfect essay, I would say, जहाँ पे आप thesis antithesis का करते हो, तो आप फर्स्ट में आप इंट्रो रखोगे, सेकंड में आप थीसिस रखोगे, थर्ड में एंटीथीसिस, फोर्थ में आप सिंथेसिस, एंड फिर कंक्लूजन. दिस सिंथेसिस को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है बिकॉज दिस हैज टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर एसे. यू हैव टू सेव द बेस्ट फॉर दिस पार्ट. सो व्हाटएवर यू आर गोना राइट, एग्जांपल्स एंड कोट्स. So coming to the next part, here I have written examples and quotes, the content of the essay. You have to decide it pre-hand. मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि okay, I will give this example, मुझे अभी ये आ रहा है. तो the best example you have to save for the para 3 and you have to spread them out as well. ऐसा नहीं होगा कि आप para 1 में कुछ नहीं, example नहीं लिख रहे, आपको सब में लिखो, but para 3 में it has to be the best. And अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज, और ये सर ने बता रखा होगा, there is a hook here in the start of the intro, so that has to be some, so hook also has to be exceptional. So there are two things which have to be exceptional: hook and para 3. Hook में there has to be some kind of anecdote or example or story or quote or news item. So वो भी मैंने कवर किया, सर ने भी वो पढ़ा रखा है, वहीं से मैंने ये चीज पिकअप करी थी. And last is a futuristic vision and a conclusion. Like echo as well. Echo भी सर ने आपको बता रखा होगा कैसे, how we do it. Basically we take the hook and we bring it back. I will also go over it in detail, but this is the mind map. Before writing, you should have this in mind, and this you will get internalized with this if you practice with many essays. So essay में मैंने practice करी थी. Like I don't practice for paper 1 and all that, but इसके लिए I did the practice, and with practice you will also find out like your word, if you're exceeding the word count, how your paras are going. That is how you will figure out ki this is perfect. Because initially when I was writing the essays, I was exceeding the word limit by a lot, and somehow I refined it and figured it out. So you must practice with this, and this will also give you very confidence. Like आपको ऐसा लगेगा कि आपकी quality बहुत drastically increase हो गई है, like just by following this structure. Okay, so because I wanted to illustrate this thesis antithesis, because I'm not sure ये मैंने सर की क्लास में पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा था, but मैंने कहीं ना कहीं ये देखा था. मतलब I did a very extensive research for essays. So these are all chat GPT generated things, because I did not have the like time or bandwidth to write it myself, but these are pretty good. So topic 1, democracy and rise of populism. So this bold part, this is the, so all these are intros, and this bold part is the thesis and antithesis. So while democracy remains the most inclusive and representative system of the governance, its openness to emotion-driven majorities poses challenges to its very foundations. So here we have a one view at the start and another antithesis opposing view at the end of that sentence. Although here the opposing view feels way too strong, but I would recommend it should be a little weaker. ठीक है. Similarly, national security and individual privacy. अब देखोगे आप इस टॉपिक में ही there is a thesis antithesis, right? यहाँ पे आपको कुछ कम अप नहीं करना पड़ा कि खुद से कुछ सोचना नहीं पड़ा, उसने खुद ही बोला है, 2 opposing views दिए हैं वहां पे.
So that's how it goes. Technology and human relationships. Convenience often erodes the depth and authenticity of relationships, leaving us more connected, but perhaps more alone than ever. Right? Education. This one I really liked. Education as a tool for social mobility. So here in this topic, इट साउंड वेरी पॉजिटिव राइट. आपको ऐसे कुछ पर से कुछ ऐसे नेगेटिव आएगा नहीं इसके ऊपर. एजुकेशन के खिलाफ कौन क्या बोलेगा, राइट. बट आई वाज इम्प्रेस्ड बाय हाउ चैट जीपीटी ने ये इसको एंटीथेसिस बनाई इसके ऊपर. इसने ही बोला है कि हाउएवर डिस्पाइट इट्स लॉफ्टी आइडियल्स, education systems often mirror and even reinforce existing inequalities, raising questions about its real capability to deliver justice. So this is a very like deep concept. आप किसी normal layman से पूछोगे, they won't be able to say this. So these views will have come when you like read about things in a bit more detail. That is why I said कि you need to, you know, be very comprehensive in terms of your studies. And I believe sir is covering matlab very good in terms of content, because majority of the content I got from him only, right? Is it clear till here? Everything. So now we will go to the written part. But I live by a train line, so a train is coming. I will just take a pause for 10 seconds while it passes. Yeah. So this is the application part. This is the actual writing of the essay. So I have, you know, if I zoom out, you will also have this, you know, bottom wala structure here. So you can get a micro image of it. But yeah, we will cover this first and then I will summarize it with the smaller picture. So this is now we are at the part where you are writing the essay. ठीक है. So आप start करते हैं intro से. But before writing, you have everything in mind. You have your thesis clear, antithesis clear. You have your examples ready. You know which example you're gonna use in para 3. अगर आपको पैरा 1 पैरा 2 के एग्जांपल्स क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, पर पैरा 3 का पक्का पता होना चाहिए कि सबसे बेस्ट वाला एग्जांपल जो मेरे माइंड में आया है, आई विल सेव इट फॉर पैरा 3. ओके. सो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया. आई मेड अ इन्वर्टेड ट्राइंगल. देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज इंट्रो हैज टू गो फ्रॉम ब्रॉड टू नैरो. आपको स्टार्ट करना है विद अ हुक. सो हुक मैंने पहले आपको बता दिया, सर ने भी बताया है कि शॉर्ट स्टोरी कैन बी एनेक्डोट, कैन बी अ क्वेश्चन, कैन बी अ स्टैटिस्टिक, कैन बी अ कोट. So but this has to be broad. It should raise questions in the mind of the reader, and it has to be some relevance with respect to the present world context or a past world context. So it is rooted in the past or the present, and it has to be broad. Okay. So I have written here something to motivate the reader to continue reading. You have to grab their attention. I think sir also covers, you know, this part very, he stresses on it very well. So that's your hook. Once the reader is hooked in, आपने एग्जांपल दे दिया, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड डालोगे, यू विल रिलेट दैट हुक विद द इशू एट हैंड, विद योर टॉपिक. आप उसको थोड़ा रिलेट कराओगे कि देखो ऐसा ऐसा मैंने ये क्यों बोला, बेसिकली, राइट. एंड देन यू विल गो विद द thesis and antithesis. Thesis is the central idea of your essay. What you're trying to say in this whole essay in one line. If you have clarity in that, then even if the reader does not agree with it, they will at least respect that. At least you have that clarity and you have the points to back it up, right? So once you give the central idea, and there, if you have the antithesis, that is the opposing but weaker view if applicable. And many of the topics in CAPF 2024, they have this, you know, they have this option there. Let me just show you. Let me just show you the, you know, essay examples. I think you all also know, but let's, because मुझे याद नहीं है वो questions, but I saw them yesterday. So right, so you will see that out of these essays, so first is digital economy, opportunities and challenges. So they have by default given a thesis and an antithesis. Antithesis is your challenges, thesis is your opportunities, because at the end you have to take a positive view. So आप अपॉर्चुनिटीज को विन कराओगे उसके ऊपर, बट चैलेंजेस को पूरा हाईलाइट करने के बाद.
Second thing is global peace and national defense budget. Now यहाँ पे you don't have a strict antithesis here, like you don't have a typical, उन्होंने दिया नहीं है, but you can make one, and how you make it, that is where you will shine, because यहाँ पे सबका, everybody won't be able to go with that. This is where you can differentiate yourself. Tribal resistance to colonial rule. So I don't think I attempted this question, but this PDF which I have made here, I gave it to ChatGPT. I told it ki whatever essay I'm gonna ask you to write, you write based on this PDF only, no other self knowledge of your own. And I gave him all these essays, and I told him to write an essay like a normal aspirant, not like you have the knowledge of whole internet. So they generated the essay there, and I have put them in the PDF only. And in tribal resistance to colonial rule, they gave an antithesis. Even मुझे भी ऐसे कुछ पता नहीं था, मतलब unless you are a very good expert, you will be able to say it. But उसने काफी अच्छा example दिया antithesis का. So आपको, we will read through it. So that is very good. Importance of tropical rainforest. अब देखिए यार, यहाँ पे particularly कुछ opposing view आएगा नहीं, because opposing view में आने पे you will be a one thing you can say is कि growth and development पे थोड़ा सा hinder होगा, उसको आप environment को protect करोगे, but it's not a very good thing to say. So I won't say कि यहाँ पे as such applicable है, but it depends on you how well you can defend it. English in India, deviance or variance. So here also they have given like two sides of a coin, antithesis, antithesis. Tribal cultures in age of globalization. Here also you can have two views, like are the cultures sustaining or are they changing? Are they aligning with the globalization, or are they holding their own? So this is an example of this very important concept of thesis and antithesis. So here you will write the central idea, but in a way which leaves them wanting for more. आप hint दोगे बस, आप उसको very इस way में लिखोगे, काफी subtle way में लिखोगे, ताकि उसको लगे कि okay, I want to know more. ठीक है? Here you will not give the closure to the reader. You will not give them fulfillment. You have to keep it very tense. Ki okay, get them excited. So this para, the following para, you will dedicate it to thesis. जो आपका main point है, आप उसके ऊपर बात करेंगे. अब ये तीनों जो para हैं, these are bodies. ठीक है? Body में हर para का structure same है, content different है. Structure is this. Line 1 में you will write the topic of the para. Simple, आप उसको मतलब थोड़ा सा लिखोगे, इंट्रोड्यूस करोगे उसको कि इस पैरा में हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. रीडर को थोड़ा आइडिया लग जाए कि ओके, दिस इज वेयर वी गोइंग. देन आफ्टर दैट यू विल गिव अ कोट और एन एग्जांपल. एक या दो एग्जांपल आप दे दो उसमें, ठीक है? एंड बट नाउ वी विल सी हाउ टू यूज एन एग्जांपल. सो once if you have a quote and example, first you will introduce it. Introduce means basically that you will give a background कि अच्छा ये quote किस era में आया, या किस author ने बोला, या किस context में बोली है बात. Second thing is you will use it. You will just put it there. आपका जो quote है उसको लिख देंगे, वो using हो गया उसका, and then you will explain it or apply it in the present context. आपके essay में वो कैसे relevant है. So these are the 3 steps to using any quote example in your essay anywhere. So in the body I prefer there has एक या दो आप रख सकते हैं based on how much content you have, and in the last line you will go with the summary of the paragraph. Summarize कर देंगे, देखो ये हमारा conclusion आ गया, this whole section is done. Then there is the antithesis. It is similar to the last para but just the opposing view. Same thing, line 1 में आप topic बताएंगे, line 2 में example देंगे, 1 या 2 whatever examples you have, then summarize it. Now these two topics, these two paras are there under the assumption that you have an thesis or antithesis. If you don't have an antithesis, then you can just write 2 paras as an extended format, right? एक ही view को आप continue कर लो, या फिर आप एक बड़ा para लिख लो. It's up to you. So structure is same. Whatever you have decided, the framework, temporal or sectoral or anything, you can go with it. So this is for thesis and antithesis. Now this para 3, I have put it a bigger rectangle here. This has to be a killer. Matlab, it has to be, you have to go all out here. Matlab, that is what I've found in my research. Structure is the same, but I will say
bring a case study and a quote as well, दोनों लाओ आप इसमें, इसके अंदर. Save your best for the last, because this is where you will reconcile the thesis and antithesis. Reconcile means आप उन दोनों को हार्मोनाइज करेंगे, आप उनके बीच में एक एग्रीमेंट लाएंगे. आप ऐसा एग्रीमेंट लाएंगे कि हम आपकी जो एंटीथीसिस है वो अग्री कर जाए थीसिस के साथ, कि भाई आपने पॉइंट्स ऐसे दे दिए कि एंटीथीसिस हैज नथिंग मोर टू से हियर, इट इज डन. सो here your delivery also has to be the best. You have to be the best at your game in terms of writing, expression, quotes. Structure is the same. टॉपिक लाइन 1 आप इंट्रोड्यूस करेंगे, एग्जांपल देंगे, कोड देंगे, समराइज करेंगे, बट एवरीथिंग बेटर, द बेस्ट यू कैन डू. सो आप ये कर लेंगे तो आपका काम हो चुका है. नाउ यू आर हियर इन द कंक्लूजन. सो आप यहाँ देखेंगे, आई हैव नॉट मेड अ इन्वर्टेड ट्रायंगल हियर, आई हैव मेड अ नॉर्मल ट्रायंगल, बिकॉज हियर यू विल गो फ्रॉम नैरो टू ब्रॉड. स्टार्टिंग में इंट्रो में यू केम फ्रॉम ब्रॉड टू नैरो, हियर यू विल गो फ्रॉम नैरो टू ब्रॉड. Line 1 will be just one line to sum it all up. You will reiterate your thesis in a different way. You will reiterate your point, which was made in the start. Line 2, you will say the issues that follow up from your investigation. आपने points तो cover कर लिए, जो आपने बोलना था वो आपने पैरा 1 2 3 में बोल दिया है, but जो future से जो thoughts आते हैं इस चीज से, because no topic ends on its own. It generates some future thoughts जो future essays में cover होंगे. So you cover those issues very briefly, ठीक है. And line 3, आप यहाँ पे दो चीजें करेंगे. Here that's where you go broad, ठीक है. You broaden the scope of the essay. You go into the future now. Starting में आपने जब broad view लिया था, आपने past और present का लिया था. अभी आप broad view लेंगे, आप future का लेंगे. And second thing you will do here, if you can, is the echo. आपने जो हुक यूज किया था, जो एग्जाम्पल यूज किया था, आप उसको यहां वापस लाएंगे इन अ फ्यूचरिस्टिक सेंस. कि आपने मान लो किसी की कोई दुविधा बताई आपने हुक में, अब यहाँ पे आके आप बोलेंगे कि फ्यूचर में अगर ये होगा तो उसकी दुविधा ये मिट जाएगी. तो आपने सॉल्व कर दिया सिचुएशन. यू गेव अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट टू द रीडर. जो आपने टेंशन, एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट बिल्ड करी थी स्टार्ट में, हियर यू गिव अ क्लोजर कि एवरीथिंग इज क्लियर. So this is where a reader will be truly satisfied with your essay, and your futuristic vision should be positive or moral, legal or pro-government or a middle path. Negative तो आप नहीं रखें तो अच्छा. Otherwise, this is the whole structure. Now here, this is a summarization, like a visual mind map for you. Like I said, inverted triangle, it is broad, rooted in the past or present. ठीक है. The hook is here. This is your introduction. It narrows down to your thesis and antithesis if it is there. Then your para 1, para 2, thesis, antithesis. Then your synthesis. And then you reiterate your thesis. I have joined these two because this is the same point which comes back here. आपने starting intro के end में जो आपने thesis डाली थी, that was with a with the excitement वाली thing, not a full reveal. But यहाँ पे जो आप thesis देंगे वो आप closure के sense में देंगे. और similarly आप फिर उसको broaden करेंगे, more issues निकालेंगे future वाले, और आखिरी में you will just give a very futuristic suggestion and you will do the echo. This way your whole essay is complete, in my opinion. So I don't think there is any flaw in this. इसमें कोई आप इसको structure को follow करेंगे तो there can't be anything मतलब beyond this. So second thing is what I have prepared is like 2 things are there. Like आपने ये सब आप तो कर लेंगे, आपके माइंड में हो जाएगा, but to make it work you need the content, and content में you need examples and you need quotes and their application, their understanding. So I will just give you some now. Examples and quotes are your domain. You have done the preparation, so you must have all that your own stuff. Reading somebody else's content without understanding is never helpful. It is always better to develop your own content. So I'm just sharing my content examples here. This is a PDF from Sir की PDF ही है ये, तो मैंने इसका screenshot डाला है. So I used to take notes like anecdote, approach, intro, use such news in essay, article 1421. So all this I have studied for the content of essays, and these screenshots are from my own current affair notes. So these are notes of my notes.
basically, because my actual notes were pretty big. So I just summarized everything. Like आप देखेंगे AI में I have said there is a junk research paper issue, there are copyright issues, small targeted more secure cost effective models are better than running AI on large scale. Nandan Nilekani said that. So that is a very important thing. मतलब ऐसे मुझे multiple articles में चीजें मिली है, मैंने एक जगह लिख दी है. तो आप ये समराइज करने से चीजों को यू गेट अ ब्रॉड पिक्चर एज वेल एंड योर टॉपिक गेट्स रिफाइंड एज वेल. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो देयर इज लाइक अ 50-page फाइल फॉर दिस. मैंने बस एक दो स्क्रीनशॉट्स डाले हैं. द सेकंड थिंग इज एथिक्स के कोट्स. आई स्टडीड एथिक्स वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर CSIR basically, not for this because CSIR में philosophical essay था, but that helped me very well because quotes, बहुत अच्छे क्वालिटी कोट्स मिले मुझे वहां पे. तो these are just like very very, this is like 10% of the screenshots. Like this I actually used, इसलिए मैंने ये डाला है. Bruce Lee said that it's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war. So last year वो GDP वाला national defense budget का आया था ऐसे. So I wrote this in the exam. So similarly you have many great quotes here, examples here. You have done your study, so make sure to use them and use them in the way that I said. You introduce it, use it, explain it. So that way you can work with it. These are like मैंने जो बताया था स्टार्ट में, ChatGPT से मैंने जनरेट करवाया using these same notes. So you see this tribal resistance wala thing. So in this third para it is saying, this is the antithesis. However, these resistances were often localized, sporadic, and lacked pan-India political vision. They were brutally suppressed by British and largely excluded from the mainstream nationalistic discourse. Now this is an AI, so obviously it is going a bit extreme, but you are a human. आप इतना extreme भी नहीं जाओगे जितना ये जा रहा है मेरे हिसाब से. So you can use these examples to see how, just to get a general idea, but I believe that you guys can write much better essays than this because at the end this is a AI still, so I don't think this is writing that great, but these are good references using the same examples, the same framework. And with that, this whole my document is also finished, and I think I've shared everything I know about essays. शवन हो गया? Yes, sir. I had one more question. Like you mentioned, हालांकि CSE का बेस तो था ही, but my question is, did you prepare some specific themes for essay, as in कि AI prepare कर लिया, national security कर लिया, cyber security कर लिया? Let me just show you. Now this document is a year older, तो अभी तो ये खास relevant भी नहीं है, but क्योंकि अब मैं different way में बनाता हूँ notes, but so this is a integrated, like this is my essay document. Even if today I have to go for an essay exam, मैं यही पढ़ के जाऊंगा. So यहाँ मैंने इसको काफी mind maps बना रखे हैं. This is my essay का everything in one page. So many interlinkages. I will suggest also कि आप जितना भी पढ़ोगे उसको आप interlink करोगे ना एक पेज में चीजों को, आपका माइंड के अंदर connections बनेंगे. This is how you will be able to use things very very fluidly. आपको ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा चीजों के बारे में. So what is it? देखिए ये सर के नोट्स हैं एक्चुअली यहाँ पे. और फिर what I'm looking for is, actually it's not in this one. Let me just yeah, these were the current affairs. So CAF वाले जिसमें आप देखेंगे ना, मैंने ये टॉपिक वाइज है. Art and culture, this was like last 6 months of current affairs. Art and culture 2 pages, women वाला issue 2 pages, 3 pages, ऐसे करके मैंने इसको segregate किया. Population issues, globalization, geography. So this was not even like CAPF specific, it was just my CSE notes because ये सारे के सारे न्यूज़पेपर के एनालिसिस हैं. और फनी पार्ट इज कि कोई ना कोई चीज कहीं भी यूज हो जाती है, and that is what gives you the edge in exam when you use something which is unexpected for the reader, right? So ऐसे करके मैंने topic wise बनाया था. So that's what I tried to show here. I hope it's clear. Yes, sir, it is indeed clear. And
earlier you mentioned that it was your, considering your age, it was your last attempt. So Yeah. you consciously did not appear earlier, or it was just the case that you were not aware, as in? I was not that मतलब अवेयर नहीं था, मतलब पता नहीं क्या, आई डोंट नो व्हाई आई इग्नोर्ड इट, पता नहीं मेरा एक्चुअली आई वाज अ बिट वो कि मुझे सीएसई करना है, मैं तो बना ही इसलिए हूँ तो मैं यही करूंगा, तो स्टार्टिंग में ऐसे ही 2 साल तो मैं इसी में ही था, बट देन आई गॉट अ बिट हम्बल्ड एंड देन आई थॉट कि ओके ऐसे नहीं चलेगा, एंड मोर ओवर लाइक विद सीएसई आई थॉट दैट कि गिविंग नो एग्जाम एट ऑल आपका मोमेंटम काफी डिरेल हो जाता है, अगर एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा तो आप उस इंटेंसिटी से पढ़ते नहीं हो, तो एग्जाम आ रहा होता है, अगर कोई भी एग्जाम होगा तो यू विल जस्ट get into a very high study mode. So I decided to give exams in 2024, whatever exams I could get, and that's how it came into my horizon. उससे पहले I thought कि studying only will do the thing for me, but I don't think it's a good approach. Also, sir, you mentioned that you unfortunately could not clear the cutoff of last year prelims. Yeah. So how you maintained your mental stability for the next 2 months until the CAPF? I mean, a lot of people are in the situation right now जिनका prelims नहीं निकला and they would be Yeah. writing CAPF. So as in थोड़ा वो भी रहता है कि what if it happens again or something like that. Yeah, it is a very real fear. I mean, मेरे को तो यही था, यही था. बट मतलब it depends. I mean, मुझे I think from the cutoffs I was getting, like from the prelims cutoffs I was getting around 70 from the coaching institute cutoffs, although finally 77 I, but I was still like not disappointed by my performance because मुझे पता था कि मेरी कमियां कहाँ हैं, ऐसा नहीं मुझे like if you know that where you have where your कमी is, आपको पता है कि आपने मॉक्स नहीं लगाया, आपको पता है कि आपने ये सब नहीं किया, तो फिर टोटली आप डिसहार्टन मत होइए, आपकी मेहनत में कमी थी, आप में कमी नहीं है, तो एज लॉन्ग एज यू आइडेंटिफाई योर ओन फ्लॉज, यू नो योर सेल्फ कि या मतलब भाई मैंने कमी करी है तो कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, आई कैन फिक्स इट, अगर मैं फिक्स करके भी ना करूं तो देन आई हैव अ रीजन टू बी वरीड, बट आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे एंड तो आई बिलीव कॉन्फिडेंस खुद पे रखना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक यही है मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का ना यही है, बिकॉज इफ यू डोंट हैव दैट इनर कॉन्फिडेंस तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी मे भी गलत कर देंगे, एंड समबडी हु हैज दैट इनर कॉन्फिडेंस उसको वो क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो वो somehow he will manage to do it right, and that is what I've talked to people and that is what they say makes the difference in clearing the cutoffs in these exams, right? So वो कॉन्फिडेंस वाली बात है, तो कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो, डू द वर्क, एक्चुअली आप मेहनत करोगे ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, आप उसके पीछे मॉक्स लगाओगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपको सब आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा बिल्कुल, आप और आप यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एग्जाम, तो कभी वो रिग्रेट वाली चीज नहीं आएगी किसी चीज पर, राइट? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you so much सचिन for joining this session. I hope कि सब बच्चों को जो है कुछ एक पॉजिटिव चीज़ मिली होगी, कुछ ऐड हुआ होगा इन्फॉर्मेशन के अंदर, कुछ ऐड हुआ होगा प्रिपरेशन के अंदर. सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ जैसे सचिन ने बोला कि पहले थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस एंड देन एक मीडियम जो है मध्यम मार्ग. मध्यम मार्ग. ओके, चलो ठीक है, फिर आज का सेशन एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. Yes, sir. टेक केयर एवरीवन. गुड बाय.